My dear friends, my name is Pramod Pruthi and I belongs to Haryana, North India. And since 2018, I am doing this business. I'm building this business full time with my family. And uh, I achieved so many things from this business. I want to be a successful person. Just a minute, my camera is hanging. Now, my camera is okay, Nishaji? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Thank you so much. And last 5 years, I enjoy my life due to this business, due to this company, due to this education system. And first of all, my dear friends, good morning to everyone, each and every one of you. And all the best for today's closing. You know, Friday is money day. Yes, Friday is a money day. So best of luck this week. Week number 474 will create huge potential for your business, in your business. And I hope you are learning so many skills from this morning session, MCM session. It's my strong appeal to you that what you learn, please implement it. What you learn, please implement it. Because implementation is very must, and this will improve your leadership, your management skills, whether it is man management or finance management. You will be strong to take for any challenge. See, my dear brother and sister, why we are gathered here? हम सभी लोग यहाँ पर सुबह क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? What is our purpose? We all wants to grow. We want to achieve financial freedom, time freedom, name and fame. And all these things comes from our big efforts. And one thing is very important, that is event. Event will be played a huge role in our success. If the planned event has taken to the business to a height, then unplanned event can also bring down the business. So what are the features of organized event, whether it is a VOP, mega VOP or mega convention program? So today we will discuss on this. And my dear friend, as usual, I will share my PPT with you. Yes, you can see my PPT is in your screen. So let's talk about how to organize a successful VOP, mega VOP and mega convention program. कैसे हम एक शानदार वीओपी, एक मेगा वीओपी या फिर मेगा कन्वेंशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, आइए उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं. लेट्स डिस्कस ऑन दिस. माय डियर फ्रेंड्स, आई moving my presentation to next slide. First, you should know who is the key person behind a successful event. कौन सा इंसान है जो इस हमारे जो सक्सेसफुल इवेंट है उसके पीछे होता है? CEO ऑफ कंपनी, यानी इट मींस मिस्टर अभिलाष थॉमस. एनी मैनेजमेंट, माय अपलाइन, माय डाउनलाइन. Who is the key person behind a successful event? Any keynote speaker, any person from management or CEO of company? Who is the key person behind a successful event? What do you think? कौन सा इंसान एक सक्सेसफुल इवेंट के पीछे होता है? क्या लगता है आपको? हमारी कंपनी के CEO, या फिर कंपनी का कोई मैनेजमेंट का इंसान, या फिर हमारी अपलाइन? Who is behind a successful event? Think about this. And here is the answer, my dear friends. Only and only that is you. You are the key person behind a successful event like a VOP, mega VOP, mega convention program or any RTP. Only and only that is you. सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो
जो एक इवेंट के पीछे होते हो और तुम्हारी वजह से इवेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, यू आर द की पर्सन, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। एंड moving to next slide, my dear friends, if you are the key person, then you should know how to organize a big event or small event. First of all, you have to check your team spirit and team motivation. Is your team is motivated or demotivated? Team spirit is high or low? You always check this when you organize a event. When you organize an event, प्लीज चेक योर टीम स्पिरिट एंड टीम मोटिवेशन। अगर एक इवेंट के पीछे मैं हूं और मेरी वजह से इवेंट सक्सेसफुल होने जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरी टीम की स्पिरिट कितनी है और मेरी टीम इस इवेंट को लेकर कितना मोटिवेटेड है, उसके अंदर कितनी स्पिरिट है इस इवेंट को लेकर, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड हमने किस तरीके की प्लानिंग करी है टीम के साथ, ये बहुत मायने रखती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ माय टीम फॉर एन इवेंट? यू हैव टू चेक दिस, आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। और अगर आगे बात करें, हाउ टू गैदर पीपल इन दैट इवेंट, हाउ टू गैदर पीपल, व्हाट इज आवर, किस तरीके के हम तरीके अपना रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने के, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक हाउ टू गैदर पीपल इन दैट इवेंट बिफोर ऑर्गेनाइज एन इवेंट, आरटीपी और वीओपी, मेगा वीओपी। यू हैव टू चेक दिस। डिफाइन द रोल ऑफ टीम लीडर्स। Every team leader has his role, so you have to define what kind of role. I will tell you in next slide. Number 1 point, who is the right person to book a hall? Who is the right person? You have to give him duty. आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो हॉल को बुक कर सकता है, वो अच्छी बार्गेनिंग कर सकता है, जो हॉल का मैनेजमेंट है उसके साथ जाकर वो अच्छा डील कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है। आपको उस इंसान को पहचानना है जो आपकी टीम में है, वो जाकर हॉल को बुक करेगा। यू हैव टू फिक्स अ पर्सन हु organize chair and sofa, who manage chair and sofa. My dear friends, this is very important point, because some respected person, some senior citizen front on the front on sofa, and our keynote speakers, our pearl executive, emerald executive, they are front on the sofa, and behind them there are audience. दोस्तों, हमें सबसे पहले चेक करना है कि वहां पर चेयर और सोफा को कैसे मैनेज करना है, तो उसकी ड्यूटी हमें एक लीडर को देनी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा जो सीनियर सिटीजन है वो फ्रंट में बैठेंगे, हमारी जो अपलाइंस हैं वो फ्रंट में बैठेंगी, उसके बाद सारे डिस्ट्रीब्यूटर और ऑडियंस जो है वो पीछे बैठेंगे चेयर के ऊपर। My dear friends, third point is sound system. You have to check the sound system before event, not in event. You have to check the sound system. Is it working right or not? You have to check the sound, and you have to give a duty to a team leader. आपको एक ऐसे इंसान को डिफाइन करना पड़ेगा जो साउंड सिस्टम को मैनेज कर सके, उसकी नॉलेज रखता हो, और वो इवेंट शुरू होने से पहले वो साउंड सिस्टम को जरूर चेक कर ले। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, shotguns. When our upline come to the stage, then who will play the shotguns?
ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन इंसान जो है वो शॉर्ट गन्स लेकर खड़ा होगा या प्ले करेगा जब हमारी सीनियर अपलाइंस जो हैं स्टेज के ऊपर आएंगी, अचीवर्स जब स्टेज के ऊपर आएंगे, देन हु विल प्ले द शॉर्ट गन्स, who will manage dance troupe. You have to define a team leader and give him a responsibility to manage a dance troupe in that particular event. If dance troupe is required in that event, then you have to give a duty to your team leader. अगर उस इवेंट के अंदर एक डांस ट्रूप की रिक्वायरमेंट है तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी एक इंसान को, एक लीडर को, जो उसको मैनेज कर सके, जो डांस ट्रूप को हमेशा रेडी रखे और समय आने के ऊपर वो डांस ट्रूप को स्टेज के ऊपर भेज सके। आपको ये सब चीजें पहले से मैनेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों, वॉलंटियर लेबल्स जो हम लोग अपने बैचेस जो हैं वो अपने ब्लेजर और कोट के ऊपर लगाते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा शुरू में। फ्लैग्स एंड बैनर्स प्रिंटिंग, these are very important because these things makes your event very successful. Flags and banners, दोस्तों ये फ्लैग्स और बैनर से जो है हमारे जो इवेंट्स हैं वो ब्यूटीफुल हो जाते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। उन फ्लैग्स और बैनर्स के ऊपर कंपनी और आपकी जितने भी सीनियर्स हैं उनकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, और फोटोग्राफ्स जो हैं वो उनकी क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, और वो सभी के सभी जो हैं उसमें प्रोफेशनल्स ड्रेस कोड के अंदर जरूर हों। ये चीजें हमें जरूर चेक करनी है और समय से पहले इन चीजों को हमें देख लेना है अगर आप इवेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इवेंट जो है वो आपके बिजनेस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, और इवेंट जो है अगर अनऑर्गेनाइज है तो बिजनेस को नीचे भी ला सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियो शूटिंग। हु इज द फोटोग्राफर? यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर टीम लीडर। यू हैव टू चेक दैट। आपको एक इंसान को डिफाइन करना है अपनी टीम में जो ये चीज चेक करेगा कि जो फोटोग्राफर है वो कौन होगा, और उसको समय पर आने, उसको समय से पहले आने के लिए उसको बोलना पड़ेगा, ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपके इवेंट को पावरफुल बनाती हैं, और इवेंट से बिजनेस जो है वो स्टेबल होता है, इवेंट से बिजनेस में ग्रोथ आती है, इवेंट से लोग डुप्लीकेट होते हैं, इवेंट से ही लोग जो हैं सीखते हैं, और सही इवेंट जो है वो होना बहुत जरूरी है। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ गुड इवेंट। सो आफ्टर वीडियो शूटिंग, हु विल हैंडल प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन? हु विल सिट ऑन द टेबल ऑफ DJ? You have to decide this. You have to decide before event. You have to give responsibility to your team leader. आपको अपनी टीम में एक ऐसे इंसान को डिफाइन करना है जो प्रोजेक्टर और स्क्रीन को अच्छी नॉलेज रखता हो। अ पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो ऑन द स्पॉट उसको उसके ऊपर काम कर सके और उसको ठीक कर सके। तो प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बाद दोस्तों अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। हु विल प्रिपेयर द स्टेज? माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द साइज ऑफ स्टेज? व्हाट विल साइज ऑफ स्टेज? You have to decide a right person who have a knowledge of events. आपको एक ऐसे इंसान को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके पास इवेंट्स की नॉलेज हो, उसने पहले इवेंट्स अटेंड किए हो, और उसको आप ड्यूटी दीजिए कि वो स्टेज को अच्छे से प्रिपेयर करने में वो वहां पर अपना रोल प्ले कर सके। पास प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, who will be the right person? Who will be the right person who print the pass and distributions? कौन सा ऐसा इंसान है जो पास की जिम्मेवारी लेगा और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लोगों को बताएगा? ये आपको पहले से, इवेंट से पहले आपको चेक करना है। माय डियर फ्रेंड्स,
parking allotment, which should be very, very manageable and organized. Parking allotment you have to check before an event. Event से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वहां उस हॉल के बाहर पार्किंग की अलॉटमेंट है या नहीं है, और ये सब चीजों को आपने पहले से ही मार्क कर लेना है, बिकॉज ये सब चीजें आपके इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगी. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, light and generator arrangement. My dear friends, sometimes we see that electricity is gone between the event. When event is running, immediately electricity is gone. So you have to check that before event that generator arrangement is there or not. If not, you have to arrange a generator. दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि इवेंट के अंदर लाइट चली जाती है तो इवेंट डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि वहां पर जनरेटर है या नहीं है. अगर नहीं है उस हॉल में तो आपको वो पहले से अरेंज करना है, और उसकी ड्यूटी आपको एक टीम लीडर को देनी है, क्योंकि सभी लोग अगर मिलकर एफर्ट्स लगाएंगे तभी वो इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा. एवरी पर्सन्स कंट्रीब्यूशन इज मस्ट फॉर एनी स्मॉल और बिग इवेंट. माय डियर फ्रेंड्स, फ्लावर एंड बुके, वी हैव टू अरेंज दीज थिंग्स बिफोर इवेंट. दोस्तों, जो हम अपनी सीनियर अप्लायंस को बुके या फ्लावर जो देना चाहते हैं उसको पहले से ही हमें अरेंज करके रखना है. अगर हम इवेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस चीज को आपको पहले ध्यान में रखना है, और एक टीम लीडर को आपने ये ड्यूटी देनी है. Who will be the host? Who will be the MC in that particular event? Event should be small or big. Host will be decided बिफोर इवेंट. होस्टिंग की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा इंसान होस्ट होगा, एमसी होगा, उसको हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है इवेंट से पहले, और उसको बोलना है कि तुम अपनी प्रेपरेशन करो. तो उसको अपना काम हमने देकर आगे बढ़ जाना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हु इज द स्पीकर. ये पहले से हमें इवेंट से पहले हमें डिसाइड करना है. वी हैव टू डिसाइड बिफोर इवेंट देन who will be the speaker, who will be the host, and we have to manage trophies earlier. हमें ट्रॉफीज को पहले ही मैनेज कर लेना है जो हम अपनी इवेंट में देना चाहते हैं. एनी काइंड ऑफ मेडल और ट्रॉफी वी हैव टू अरेंज बिफोर इवेंट. माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट योर इवेंट should be successful, please arrange these things before इवेंट. तो ट्रॉफीज और मेडल्स जो है वो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि कितनी ट्रॉफीज और कितने मेडल्स हमने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. आपके पास सभी टीम लीडर्स की लिस्ट आ जानी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडल्स और ट्रॉफीज पहले से ही अरेंज करके रखनी है. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया, डिड यू मैनेज ड्रिंकिंग वाटर? दिस इज वेरी यूजफुल पॉइंट. Drinking water should be there outside of the hall. It should be there. And who will arrange this? This will arrange a team leader. You have to give responsibility to your team leader that your work is to check that drinking water is there or not. Only that is your work. तो एक इंसान जो है वो पीने का पानी चेक करेगा कि मैं वहां पर वो पीने का पानी खत्म तो नहीं हुआ है, और पीने के पानी को जो हॉल के बाहर के एरिया में हमें वहां पर लगाना है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो. हॉल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होना चाहिए. सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज वेरी यूजफुल पॉइंट. व्हाट इज योर सिटिंग अरेंजमेंट? व्हाट इज द मेन, वेयर इज द मेन डोर? इज मेन डोर इज इन फ्रंट और बैक साइड? A right situation is entry gate is on back side of the hall.
दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमें चेक करना है, और जो हमारा मेन गेट है जहां से एंट्री होगी वहां पीछे वो गेट होना चाहिए। लोग पीछे से आएं और आकर आराम से बैठ जाएं ताकि इवेंट डिस्टर्ब ना हो। ऐसे हॉल को आप मत लीजिए जहां पर एंट्री जो है वो फ्रंट से है, तो उससे लोग डिस्टर्ब होंगे, आपका इवेंट डिस्टर्ब होगा। एंट्रेंस इज वेरी क्लियर, इट इज द बैक साइड ऑफ द हॉल, it should be backside of the hall. And fund management, you have to check before event. You have to check before event, not after event. Don't fight with your team leaders, it is organized before event. तो फंड मैनेजमेंट जो है ये आपको पहले चेक कर लेना है कि ये इवेंट में कोई ओवर बजट तो नहीं है। तो अगर ओवर बजट है तो कौन इसको कंट्रीब्यूट करेगा, उसको आप पहले से ही, इवेंट से पहले ही आप उसको देख लीजिए और चेक कर लीजिए। Stalls for promotional material, who will arrange promotion material, and that stall is also outside of the hall. दोस्तों प्रमोशन मटेरियल बहुत जरूरी है। फ्लिप चार्ट्स, कैप्स, टी शर्ट्स, ब्राउशर्स, प्रोडक्ट ब्राउशर्स, टाइज, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और जब कोई इवेंट हो, कोई बड़ा इवेंट हो, तो उसके हॉल के बाहर ये स्टॉल जरूर लगना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट यू हैव टू चेक बिफोर इवेंट। नाउ contact and invite. How to contact and invite for an event? Always use the seminar for the second look. Always use the VOP for the second look. First, you show the plan in group meeting or one-to-one plan, and in second look, you have to plug in the people with that particular VOP. You have to check that person who is coming in mega VOP, any convention plan, he already took plan from you or not. You have to check this. दोस्तों पहले लोगों को प्लान दीजिए, वन टू वन या फिर आप ग्रुप मीटिंग में दे सकते हैं। उसके बाद आप उनको सेकंड लुक में अपना कोई बड़ा इवेंट आप जरूर दिखाएं जो मेगा VOP और कन्वेंशन प्रोग्राम हो सकता है। Approach should be right. Approach should be right. It should be giving approach, not begging approach. You have to check this with your team leaders. Now, my dear friends, moving to next slide, role of audience. What is the role of your distributors? They should be in discipline. वो discipline में होने चाहिए। आपके जो distributors हैं, आपको check करना है कि वो डिसिप्लिन में है या नहीं है, पंक्चुअल है या नहीं है। उनका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। When they are coming to event, they wear proper dress code. They should be in discipline. They have to punctual on time and they wear proper dress code. जो हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और प्रॉपर ड्रेस कोड में वो हमारे इवेंट में आए, बड़े कन्वेंशन प्रोग्राम में आए या मेगा VOP में आए। डोंट वेट आउटसाइड द हॉल। यू ऑलवेज टेल योर पीपल, डोंट वेट योर गेस्ट फॉर आउटसाइड द हॉल। कभी भी लोगों का इंतजार हमें हॉल के बाहर खड़े होकर नहीं करना है। ऐसा आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना है और तभी आप एक अच्छा इवेंट कर पाएंगे और इवेंट से आपका बिजनेस ऊंचाइयों पर जाएगा। डोंट वेट द पीपल्स टू आउटसाइड द हॉल। गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्पीकर। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह समझाना है कि जब कहीं पर स्पीकर ने कुछ सवाल किया तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्पीकर। ऐसा करने से क्या होगा, जो अंदर का माहौल होगा वो हमेशा गर्म रहेगा, एक्टिव रहेगा। नाउ क्लैपिंग एंड बॉडी लैंग्वेज, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ any successful event, any successful event.
clapping and body language. Please mind this. Always clap in event. Your body language should be always in posture. Maintain your posture. Yes, yes, always give this type of response. Don't go here and there. Don't go here and there. आपको कभी यहां वहां नहीं जाना. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इवेंट में ही वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, उससे माहौल बिगड़ जाता है और इवेंट खराब हो जाता है. For good event, don't go here and there. Just sit properly and focus on the stage. Just sit properly and focus on the stage till the end of event. If you want your event should be successful. Timing should be given to the prospect, my dear friends. It is very important. आपके जो प्रोस्पेक्ट को आपने टाइम दिया है, उस टाइम के उसको आने के लिए बोले. और who will be on the gate, you have to check. There are 3 or 4 person who will on the main gate of the event. Don't look back. Sometimes also I see so many people when there are some noise behind the hall. Some people see back. Don't look back. Never look back. Excitement and enthusiasm. You have to check your excitement. Your excitement is on peak. Always be excited in particular event. You should be a better listener and learner. If you are coming in your event, you should be a better listener and learner. अगर आप इवेंट में आ रहे हैं तो आपको सबसे अच्छी जो आदत अपने अंदर डेवलप करनी है वो है सुनने की आदत और सीखने की आदत. ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी. You have to develop this habit when you are coming to an event. This is very, very important. Now, after meeting, try your guest, meet the speaker. Don't try to convince the guest during the presentation. This is very important point. Never try to convince the guest during the presentation, during the event. Just focus on the stage. Just focus on the stage. Follow-up meeting should be fixed. Follow-up meeting should be fixed. And after event, your follow-up should be start. My dear friends, achiever recognition, it is a very, very important point in any particular event. दोस्तों, किसी भी event के अंदर जो है, जो अचीवर्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज जरूर किया जाना चाहिए. और यहीं से लोग इंस्पायर्ड होते हैं. जो हमारे नए गेस्ट आए होते हैं, प्रोस्पेक्ट आए होते हैं, वो यहीं से इंस्पायर्ड होते हैं और क्या होता है, आपका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है. सो दीज आर द पॉइंट्स एंड आई विल show you once again which I discussed to you from first slide. Who will be the key person of a successful event or VOP? And my dear friends, that is only and only you. Only and only that is you. सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो इस इवेंट के लिए एक बेहतर इंसान हो और तुम ही इवेंट को सक्सेसफुल कर सकते हो. इस चीज का आपने ख्याल रखना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, these are the key points for any successful event. Event should be small or big. These points always works for you. These points always work for event. And events gives you potential. Events gives you huge money. So always focus on events. Events should be small or big, but you have to check these points before any event. So my dear friends, this is the topic which I want to discuss with you, and this is today's presentation. So once again, keep your mind
on your business, focus your goal, and today is closing. Make this closing huge. Thank you so much.